Now we have reached a dense forest. We are nearing the cave point. My friends are going ahead. So let's see how we can catch it. But it's really a fantastic place to be. It's near Thane, hardly 4 kilometers, 5 kilometers. So we have come a long way now from backside. So you can see, have a look at it. It is so beautiful. And let's do it. दोस्तों ये हमारा गाइड रोशन, जीतू, शरद, ठीक है। अभी हम लेके जा रहे हैं यहाँ से ऊपर जाके हम चिकन बनाएंगे और विजय भाई के लिए जो हमारे यहाँ पे बॉडी बिल्डर नाम के जाने जाते हैं। और ये राजेश भाई है और ये हमारे विजय योगेश माने साहब, सॉरी योगेश माने जी है और मैं ये खुद। तो अभी हम ऊपर जाके चिकन बनाने वाले हैं। विजय भाई के लिए पनीर लाया हुआ है, देखते हैं जंगल में कैसे बनता है पनीर। फ्रेंड्स वी हैव रीच्ड द सेकंड स्टेज ऑफ केव पॉइंट. Now we can see there is a natural reservoir which I can see over here. यहाँ से कुकिंग के लिए पानी लेने वाले हम लोग. Exactly. So as Vijay rightly said, we are going to take water from here for a cooking purpose. So Vijay Mane, our expert, is observing or making some inference from the water whether it is reviewing whether it is clean or not. Yeah. जो ये जो मछली होती है ना, वो अगर होती है ना तो वो पानी पीने लायक होता है. Yes. So he has given some insight. So I think this will surely help. Jitu, our guide, who is checking whether the water is part of the water. So it's a beautiful place. You can see a lot of banana trees. It's a green place. Rajesh is also observing something from the back side. He is the last expert because he checks if everything is in place. Otherwise, he doesn't speak much. So that's how it is. Friends, we have reached stage 3 of our cave point trek. What we have found is this is a very beautiful rose. I mean to say flower. We have named it Dagad Fool. That is rightly named by Vijay Bhai. So let's see how it is. But the sky. So we are at the last stage of summit, and we have explored this very beautiful mountain called as Cave Point. So in next, I think 15 minutes we will reach the point. Stay tuned with us. Thank you so much. So guys, we have reached a point. You can see the beautiful, densely covered forest. It's start of monsoon season. Yesterday it rained heavily, but today you can see a lot of any greenery is there, but it's a dense forest. So nice place to be in. We are enjoying. ये सही में नहीं वो सही. So friends, just to give you a classic example, nature has its way of growing again. कुछ दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी, सब कुछ भस्म हो गया था, बट अभी आप देखिए वापस अपने आप को एक मौका दिया है और यहाँ पे प्लांट्स फिर से ग्रो होने शुरू हो गए. थोड़े दिनों में यहाँ पे पूरा हरा भरा हो जाएगा एंड दिस प्लेस विल अगेन बिकम ग्रीन. थैंक यू. किधर है मंकी?
Friends, you can have a look at this big stone on this mountain. I just go over there and I'll show कितना बड़ा है ये. विजय भाई प्लीज आप थोड़ा कैमरा होल्ड कीजिए. आप देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर है. काफी ह्यूज रॉक ये स्टैंडिंग है. हैप्पी आप यहाँ पे कितना चौड़ा है और यहाँ से आगे जाके आपको मिलेगा. इसीलिए तो वो कह रहा था कि चलो चलो चलो. अब कैमरा बंद नहीं होगा. Whoa, awesome. हम छोटे छोटे पत्थर दिखा रहे थे और इसको हमने मिस कर दिया. मैं चढ़ जाऊंगा. तू ये ऐसा ये कैप्चर कर ऊपर से चढ़ते हुए. मैं चढ़ जाऊंगा खुद से. अरे अपना अपना खुद ही आओ, किसी का हाथ मत पकड़ो. ऐसे ले ऐसे वॉक. Oh my goodness, look at the view. It is heaven. It is literally heaven. Freak, man. Guys, now I'll take you to the biggest surprise of the day. Amazing view of this trek. The most amazing. The most amazing view of this trek. Have a look. So we have earned what we are here for. So I'll just take you. It's a super huge rock. I don't know. The beauty of nature is so elegant that you can see this rock and we can see everything from here. Have a look. So this is our beautiful city Thane. Vijay bhai. So wonderful decision. Wonderful That we decision. came here and let me just sit here and pose for you guys. Yes. तुम लोग पहले ना फोटो वीडियो करके साइड हो जाओ. फिर मैं ये पूरी जगह का वो वाला पत्थर सही है. हाँ राजेश.
So guys, we came for trek at this place. Just look at this beautiful location and see if you are able to identify, this area. So look at this. This is the creek, the famous coal shed Chena Beach creek, and this here is this one here. Here, it's Chena Bridge. That's fountain. That's fountain. That's the bridge that connects the Ahmedabad or Gujarat state. ये है हमारे गाइड रोशन काफ़ी बड़ा लकड़ा लेके आए हैं और काफ़ी चीज़ें लेके आए हैं। काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे बनेगा, बढ़िया सा यहाँ पे बनाएंगे हम अभी चिकन। बिल्कुल नहीं आला भाई। आता त्याला स्पूनने आग के लिए वो साइड जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने मस्त खाना वाना खा के आराम करके, रोशन हमारे गाइड हमारे साथ हैं। अभी हम रिटर्न निकले। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जा रहे, हम जाएंगे अभी केव पॉइंट के अदर साइड से। सो मज़ा आएगा। तो केव देखते हुए गुजरेंगे हम लोग। I can't believe I am in Thane. Such a beautiful peace and place it is. What a serene beauty and tranquility I can see across. Look at this place. Oh wow. मुझे ऐसा लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री में आया हूँ। वो पत्थर देखो सामने। हाँ।
रुक रुक अजय इधर बैठ मैं निकालता हूँ हाँ आओ यहाँ बैठो 3-4 फोटो निकालो मैं घुस दिखाऊं गुफे के अंदर हाँ ये અહીં Yes, this is Mundi Hill flag. Somehow due to heavy wind, it has broken down. But you can have a look at this mesmerizing view from Mundi Hill, which is just awesome. You can see New Bombay, Thane, New Bombay, and I think it's Washi Khadi. And look at this view. Friends, we are at the Mundi Hill. That day we came on Mundi Hill, but we were at this point on the dense forest part. Now we are actually on the Mundi Hill where we have targeted last month. So guys, after 9 hours of trek, we have reached to our last point. We covered Gaudev Hill, we covered Mundi Hill, and here we are at the, so our guide is guiding us. You can see all the people. Hey!